So English वाली चैन बुक्स ले लीजिए लोग. Spiral bound can give one. Page 16. English is not 16. Is it? Switch numbers. You pay respects to Triple Gem first. So we just do the Pali. Yo so Bhagava Arahang Sama Sambuddho Swakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yasa Bhagavato Sawaka Sangho Dhammayam Bhagavantang Sadamang Sasangham Imehi Sakare Hiyatadahang Arobitehi Abhipujayama Sadhuno Bante Bhagava Suchira Pariniputopi Pachima Janata Nukampa Manasa Ime Sakare Dukatapana Karapute Patikanhatu Amhakang Garatang Hitaya Sukhaya Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sawakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Handamayang Buddhasa Bhagavato Bupapa Kamana Karang Karomase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. And of course, we do a shortened version, then we'll just do the supreme sort of teachings of the Buddha on page 17. No. Page 19, sorry. We'll just do the English page
page down, where it says Supreme Praise of the Buddha. Page 19. The Buddha, the truly worthy one, endowed with such excellent qualities, whose being is composed of purity, transcendental wisdom and compassion, who has enlightened the wise like the sun, awakening the lotus. I bow my head to that peaceful chief of conquerors, the Buddha who is the safe, secure refuge of all beings. As the first object of recollection, I venerate him with bowed head. I am indeed the Buddha's servant. The Buddha is my Lord and guide. The Buddha is sorrow's destroyer, who bestows blessings on me. To the Buddha I dedicate this body and life, and in devotion I will walk the Buddha's path of awakening. For me there is no other refuge. The Buddha is my excellent refuge. By the utterance of this truth, may I grow in the Master's way. By my devotion to the Buddha and the blessing of this practice, by its power, may all obstacles be overcome. By body, speech, or mind, whatever wrong action I've committed towards the Buddha, may my acknowledgement of fault be accepted, that in future there may be restraint regarding the Buddha. The same again, the supreme praise of the Dhamma. Now let us chant the supreme praise of the Dhamma. It is excellent because it is well expounded, and it can be divided into path, fruit, learning, and liberation. The Dhamma holds those who uphold it from falling into delusion. I revere that excellent teaching, that which removes darkness, the Dhamma which is the supreme, secure refuge of all beings. As the second object of recollection, I venerate it with bowed head. I am indeed the Dhamma's servant. The Dhamma is my Lord and guide. The Dhamma is sorrow's destroyer, and it bestows blessings on me. To the Dhamma I dedicate this body and life, and in devotion I will walk this excellent way of truth. For me there is no other refuge. The Dhamma is my excellent refuge. By the utterance of this truth, may I grow in the Master's way. By my devotion to the Dhamma and the blessing of this practice, by its power, may all obstacles be overcome. By body, speech, or mind, for whatever wrong action I've committed towards the Dhamma, may my acknowledgement of fault be accepted, that in future there may be restraint regarding the Dhamma. Now let us chant the supreme praise of the Sangha. Born of the Dhamma, that Sangha which has practiced well, the field of the Sangha, fond of 8 kinds of noble beings, guided in body and mind by excellent morality and virtue. I revere perfected in purity, the Sangha which is the supreme, secure refuge of all beings. As the third object of recollection, I venerate it with bowed head. I am indeed the Sangha's servant. The Sangha is my Lord and guide. The Sangha is sorrow's destroyer,
and it bestows blessings on me. To the Sangha I dedicate this body and life, and in devotion I will walk the well-practiced way of the Sangha. For me there is no other refuge. The Sangha is my excellent refuge. By the utterance of this truth, may I grow in the Master's way. By my devotion to the Sangha and the blessing of this practice, by its power, may all obstacles be overcome. By body, speech, or mind, for whatever wrong action I've committed towards the Sangha, may my acknowledgement of fault be accepted, that in future there may be restraint regarding the Sangha. Okay, so again, we'll do some short reflections. Is that including sitting as well? Okay, fine. Okay. Okay. So, page 55. The verses of the burden, on the burden, regarding the 5 aggregates. Hannamayang Barasutakatayo Patnamase Barahave Panchakanda Baraharo Chapukalo Para Adanantu Kam Loke Para Nike Patnang Sukang. The 5 aggregates indeed are burdens. The beast of burden though is man. In this world to take up burdens is dukkha. Putting them down brings happiness. Nikipita wagaram param anyam param anadiya. Samulhantam ham abuya nichato parinibuto. A heavy burden cast away, not taking on another load. With craving pulled out from the root, desire still one is released. Next page. Handamayang padekadatagatayo patnamase. Atitan nan wakameya napatikanke anagatang. Yad atitang pahinantang apatan cha anagatang. One should not revive the past, nor speculate on what's to come. The past is left behind, the future is unrealized. Pachupanan chayo damang tata tata vipassati. Asanghirang asangkupang tang vidang anubruhaye. In every presently arisen state, there just there one clearly sees, unmoved, unagitated. Such insight is one's strength. Ajiwa kichang atapang ko janya badanang suwe. Nahi no sangarang te na maha setne na machuna. Ardently doing one's task today. Tomorrow who knows death may come. Facing the mighty hordes of death. Indeed one cannot strike a deal. Ewang viharing ataping aho ratam atanditang.
Tang we ba te ka ra to te santo achi ka te mone. To dwell with energy aroused, last for a night of non-decline. That is a night of shining prosperity. So it was taught by the peaceful sage. Okay, and we'll finish off on page 31. The sharing and aspirations. 3-1. Now to chant the verses of sharing and aspirations. Through the goodness that arises from my practice, may my spiritual teachers and guides of great virtue, my mother, my father, and my relatives, the sun and the moon, and all virtuous leaders of the world, may the highest gods and evil forces, celestial beings, guardian spirits of the earth, and the Lord of death, may those who are friendly, indifferent, or hostile, may all beings receive the blessings of my life. May they soon attain the threefold bliss and realize the deathless. Through the goodness that arises from my practice, and through this act of sharing, may all desires and attachments quickly cease, and all harmful states of mind, until I realize Nibbana in every kind of birth. May I have an upright mind, with mindfulness and wisdom, austerity and vigor. May the forces of delusion not take hold, nor weaken my resolve. The Buddha is my excellent refuge, unsurpasses the protection of the Dhamma. The solitary Buddha is my noble guide. The Sangha is my supreme support. Through the supreme power of all these, may darkness and delusion be dispelled. So now we'll sit quietly for half an hour or so. I'll ring the bell to end the session. And then we'll continue on with some questions and answers.
Before we start with the question and answers, I'd like to welcome back Bante Tantisaro, back to Saṅghārāma, back from Israel, and maybe can say a few words or share some experiences before we start. Yes, thank you, Ajahn. So, yes, I just arrived back from a visit to Israel. This was my first time visiting home since coming to the monastery, originally in Thailand, more than 4 years ago. And it was a very meaningful visit. After seeing family after so long, of course, was very, very significant. Especially since, as many of us know, Israel has been having difficult times in the past few years. So to be able to be close to the family members who have been enduring these hardships really meant a lot, both to them and to myself. And it's good to be back, good to see so many guests and to see the Sangha, of course. To see the progress that's been made with the kuti that really took a huge step forward since I left, and many other improvements around the monastery. And I guess that's all for now, but it's good to be back. Yes. तो सबसे पहले न्यानमारो जी ने तिसरो जी का स्वागत किया वापस विहार में, मोनेस्ट्री में, और उनको इनवाइट किया कि कुछ अपने अनुभव शेयर करें। तो तिसरो जी ने बताया कि करीब 4 वर्ष के अंतराल के बाद वो अपने परिवार से मिले, और जैसा कि हम सब जानते हैं इस दौरान इज़राइल में काफ़ी लोगों ने मुश्किलों का सामना किया है, बहुत सारी उलटफेर हुई है। तो उन्होंने बताया कि उस संदर्भ में अपने परिवार के साथ हो पाना और उनकी हौसला अफजाई कर पाने का उनको मौका मिला, जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर वापस आके वो देख रहे हैं कि इस करीब महीने भर में कई चीज़ें यहाँ बदली हैं, कई नई चीज़ें वो देख रहे हैं। तो संक्षिप्त में काफ़ी प्रसन्न हैं और इस बात से भी खुश हैं कि वो घर जाके अपने निकटवर्ती परिवारजनों से मिल सके और उनको प्रोत्साहन दे सके। हम क्वेश्चंस ले सकते हैं अब, अगर कुछ स्पष्ट सवाल हों इंटरनेट की ऑडियंस के या यहाँ। देयर वाज ऑलरेडी वन क्वेरी इन रिस्पेक्ट टू जो दोपहर में चर्चा हुई थी मेडिटेशन की और भावना की। तो द क्यूरियोसिटी वाज रियली, यू नो, what there is some confusion about the Buddha's teachings. So popularly it is believed that the Buddha taught meditation, and where meditation is defined as sitting with eyes closed and focusing on something. So can there be some clarity on this? So maybe both of you can open your eyes and see which one of you want to take it. दोनों आंख बंद करके बैठे हैं। हाँ, आप लोग। So, what was the question exactly? Okay, so as Bante Navarro said correctly, in Pali, there is no such word as meditation. It's an English word that is used in, for example, Christian practices. The word we use in Pali is bhavana, which literally means development. Now, what does it mean, development? Where does it come from?
तो इसमें क्योंकि ये सवाल बार बार आता है और इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, इसको मैं समराइज नहीं करूंगा, बल्कि जैसे अनवजो जी बता रहे हैं तोड़ तोड़ के बताएंगे। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि बिल्कुल तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो जो पाली सूत्र हैं उसमें मेडिटेशन नाम का कोई शब्द वैसे आता नहीं है। मेडिटेशन शब्द क्रिश्चियन जो परंपराएं हैं वास्तव में वहां से ये आया है, तो उसको हम अपने अंग्रेजी भाषा में उसको लाया गया है। जो करीबी शब्द जो भगवान की शिक्षा पुराने सूत्रों के आधार पे है, उसमें जो शब्द करीब आता है उसको भावना कहा जाता है। भावना मतलब किसी चीज को भावित करना। Now, the word bhavana appears first. It's the first discourse of the Buddha, the Dhammacakkappavattana Sutta, where he described what one should do regarding the Four Noble Truths. So the essence of the teaching. So as we may know, first truth, suffering, one should understand. Second truth, or suffering, one abandon. Third truth, the end of suffering, one should realize. And fourth truth, and here it's relevant for us, the path leading to the end of suffering should be bhavana, should be cultivated and developed. तो जो पहला भगवान का जो पहला सूत्र भगवान ने सिखाया था धम्मचक्कपवत्तन सूत्र, उसी में भावना शब्द सबसे पहले आता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो चारों आर्य सत्य हैं उन सब के प्रति हमारे कुछ ना कुछ भगवान ने कर्तव्य बताए हैं। तो उदाहरण के तौर पे जो पहला आर्य सत्य है कि दुख है, तो दुख को पहला उसमें कर्तव्य है, जो एक्शन है वो है उसको जानना चाहिए। फिर दूसरा वाला कि उसका सेकंड, हाँ, तो जो उसका समुदय है उसको हमें उसका प्रहार करना है। और जो निरोध है उसको मैं हिंदी उसका साक्षात्कार करना है निरोध का। और चौथा जो है वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, दुख निरोध की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग जो है, उसकी भावना करनी है। तो भावना वहां से भगवान की शिक्षा में विशो शब्द वहां सबसे पहले हमें मिलता है। And as we read in the sutta, the Dhammacakkappavattana Sutta, just on hearing this kind of teaching, one disciple got liberated. So it is not said that he was liberated because he was focusing on the breath or something like that, but just by contemplating the teaching or listening to the teaching. And this relates also to what we have read this morning, what we have listened to this morning, that there are 5 opportunities for liberation. One of them by listening to the teaching, one may transform one understanding. Second one, by teaching others, even one can transform his understanding and get liberated. Third one, by examining the teaching, contemplating them, one can get liberated. Fourth one, by reciting them, just like we practice the chanting, it gives a lot of energy, a lot of joy, a lot of engagement, one can get liberated. And fifth one, by focusing on a meditation subject and grasping it properly. तो क्योंकि हम धम्मचक्र सूत्र की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं, बहुत दिलचस्प बात है कि इस सूत्र के अंत में जो अन्य कौंडिन्य थे वो सोतापत्ति फल उनको प्राप्त हुआ, मतलब वो मुक्ति के स्रोत में पड़ गए। अब अनवजो जी कह रहे हैं कि देखिए बहुत दिलचस्प बात है, ये जो इनका लिबरेशन हुई या लिबरेशन का मार्ग में वो पड़ गए, उस दौरान वो सुन रहे थे शिक्षा। ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके किसी कर्म स्थान पे फोकस कर रहे थे, कंसंट्रेशन कर रहे थे या सांस को देख रहे थे, ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सुन रहे थे। तो आज सुबह जब हमने चैंटिंग वाला सत्र किया था तो हमने
उस प्रसंग के बारे में अनवजो जी ने हमें बताया था, जिसमें 5 तरीके मुक्ति के स्रोत में पढ़ने के बताए जाते हैं, जिसमें से पहला था, द फर्स्ट वन वाज सुन, केवल धर्म का श्रवण, है ना, सुनने। जब हम धर्म गंभीरता से सुन रहे हैं तो मन मुक्त हो सकता है, जैसा कि धम्मचक्कपवतन सूत्र में आता है। दूसरा, किसी और को जब हम धर्म सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है मुक्ति के मार्ग का। तीसरा, उच्चारण करना, वही जो हम आज सुबह कर रहे थे। इसीलिए चैंटिंग को, पाठ को इतना महत्व दिया जाता है कि भगवान बताते हैं कि उच्चारण करने की जो प्रक्रिया है वो भी हमें मुक्ति के स्रोत में डाल सकती है। विवेचन, या चौथा है अवलोकन करना, विवेचन करना। जो टीचिंग है उसको मन में टटोलना, उसकी अन्वेषणा करना। इस तरीके से जो कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, जो इंग्लिश के शब्द हैं, जो हिंदी के उसके पर्यायवाची अन्वेषणा, अवलोकन, विवेचन है, ये भी मुक्ति के मार्ग में हमें डाल सकता है। और पांचवा जो है वो है जिसको हम टिपिकली मेडिटेशन डिफाइन करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कर्म स्थान पे अपना मन लगाना। तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि जिस चीज को हम लोग शायद सामान्य रूप से मेडिटेशन समझते हैं या भगवान की शिक्षा समझते हैं, वो है अवश्य, पर उसके अलावा कई सारे भी तरीके भगवान ने बताए हैं मुक्ति के स्रोत में पढ़ने के लिए, निर्वाण की तरफ अग्रसर होने के लिए। तो अनवजो जी ने वो हमारे लिए समराइज किया। सो आई थिंक मे बी दैट्स क्वाइट गुड। काफी इससे हमें क्लैरिटी हुई। अगर इस पे आगे कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ सवाल है तो उसको भी हम ले सकते हैं। These steps are set. वो बनते जी, ये स्टेप्स अपने आप में काफी हैं या ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या इनको हम these are the method itself is enough, one method is enough, or these are different steps to, or these one step supports the another step? Just we sometimes learn and listen. One is the Suttamai Panna, and then Bhavnamai, and then sorry, this the 3 steps of this thing. Yes. So you ask about these 5 methods, if just one will be enough? Or these are collectively will help us. Maybe one is stronger than another, or some in one person or in one situation. Yes. So of course, my understanding is that it's different from person to person. It's individual. Certain people will be benefit more from one or the other, but generally most people will need more than just one. And we can assume, for example, that the Dhammacakkappavattana Sutta, we may say, okay, Anya Kundanya understood, realized the Dhamma after hearing just one Dhamma discourse. Amazing, but my understanding and most people understand is that Anya Kundanya practiced a lot before that, all kind of things, including, of course, taking meditation object, also other practices like austerities, which are not the path. But we can understand that he heard a lot, contemplated a lot, was a very wise person, and also practiced a lot of samadhi. This is my understanding. तो विजय जी का प्रश्न मेरे ख्याल से हम समझ ही गए हैं कि क्या इन पांचों में से कोई एक पर्याप्त है या ये पांचों कॉम्बिनेशन में होने होते हैं। तो अनवजो जी बता रहे हैं हमें कि ज्यादातर आचार्य इस तरह से बताते हैं। एक तो ये बात है कि हर व्यक्ति का मानस क्योंकि अलग होता है, दूसरों हर व्यक्ति का अपने आप में मानस अलग 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 है और वो उसके कर्मों पे आधारित है।
तो किस व्यक्ति के लिए क्या कॉम्बिनेशन या क्या तरीके पर्याप्त हैं, उचित हैं, वो अन्य व्यक्तियों से डिफर करेगा। अब कई लोगों में कई चीजें कॉमन होंगी अवश्य। जब सुत्तों में हम प्रसंग पढ़ते हैं तो कई बार, या सुनते हैं तो कई बार हमें एक अवधारणा हो सकती है, जैसे कि जो पहला सुत्त है, ऐसा लगता है कि भाई बस केवल एक बार कुछ सुना और वो मुक्ति में पड़ गए। ऐसा नहीं है। उनके जो अन्य कौंडिन्य हैं, जो उनके बाकी साथी थे, उनकी बहुत गंभीर पुरानी प्रैक्टिस रही थी। वो समाधि में, ध्यानों में संभवतः पुष्ट थे। उन्होंने बहुत घोर तपस्याएं की थी, जिसका जिसका कि तो अब भगवान की टीचिंग में जिक्र आता भी नहीं है। बल्कि तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका मानस इतना विकसित हो चुका है, संभवतः उसके लिए केवल सुन के मुक्ति के स्रोत में पड़ जाना संभव है। हमें उसको ऐसे समझना है कि जो टीचिंग है वो बहुत विविध टीचिंग है, और क्योंकि हमारे सामने एक परफेक्ट टीचर भगवान बुद्ध जैसे नहीं मौजूद हैं, तो इसीलिए हमारे लिए टीचिंग को उसकी विविधता में समझकर अपने मानस के अनुसार अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाना, और अलग अलग समय पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस कारगर होते हैं, इसको कर पाना आवश्यक हो जाता है। और इसलिए ये आचार्यगण हमें इनकरेज करते हैं कि हम टीचिंग्स को अच्छी तरीके से पढ़ें, सीखें, समझें, ताकि अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसको हम उन टीचिंग्स के अनुसार फिर हम प्रैक्टिस कर सकें। तो हम किसी एक फॉर्मूले की वेट ना, आई एम जस्ट गोइंग लिटिल बिट बियॉन्ड व्हाट यू सेड। हम किसी एक फॉर्मूले की केवल उम्मीद ना करें, बल्कि जो सुत्तों से वर्तमान के परिवेश में यूजफुल है, उस तरीके से हम उसको कोशिश करें अपने ऊपर लगाने की। So that means we are different people are stuck up at different stations or different points. So whatever at that point, so they have a different understanding or solutions for their. You can say that not the problem, but not the we can say. Sure, yes. Where they are kind of bottleneck for every person is different. Right, right. Every person has different paths, different conditions, different tendencies. It's like even in normal life, for example, some people will have a certain tendency to practice a certain art, other people will go to certain science, other people will do some civil service. And everyone has to find kind of his way to develop himself even in the normal worldly way of finding oneself in life. And no one has the same kind of conditions, same support, same kind of connections with people. Same with our spiritual practice. So we have all kind of practices, all kind of ways of teaching. The Buddha taught different people differently. Just take, for example, how he taught the third sermon. He gave the simile of fire, because those people who listened to him were already worshipping fire for many, many years. And this way, where he explained them the actual meaning of fire, the world is on fire, was completely transformative for them. Other people, he taught differently. There was one smith who was for 500 years kind of had a very strong Loba charit, yeah, very much like of beauty. He was always into kind of flowers or making beautiful things. And some teacher tried to teach him how to meditate on the unattractive, but it didn't work because it was just against his character. Eventually, the Buddha taught him while contemplating a flower, and this worked. Eventually, he saw the impermanence in a flower. And there are many other such stories. And so even in the what we call formal practice, when one take a certain subject, focus on it, there are many, many ways, many kind of styles of practice which confront different obstacles and
use different strengths, because disciples also have strengths. Some disciples have strong faith, some have strong wisdom. So one has to also know what is the power of this disciple, how to use it. So also in the roads, some people have great ability to listen. Some has a great ability to teach, or they are very kind of get engaged when there are other people present. It might be useful for them to use it, the Dhamma teaching, as a way to get liberated. And there is kind of a sutta when one monk was already anagami, and only after he was asked by other people to explain the many things, by explaining them, he got liberated. It's very interesting. So it breaks up our usual perception of what practice is and what is liberation. Actually, arahants are very different people. Like if you even look nowadays in Thailand, we see people that consider to be arahant, like in the Thai tradition, we have people like Lungta Mahabua or Ajahn Man, and we have Lungpo Liam, we have Ajahn Chah. We might expect, okay, all arahants should be kind of the same, just kind of like a, I don't know, some kind of a model like the Buddha, how the Buddha was. But that, just like people are different, they are different. So to your question, yes, it's very much depend on the individual. It's good to try many things to develop different parts of one's personality, like a tree that develops many branches. If one has only one branch, one grows to the side. One cannot grow tall, and then one cannot doesn't have a canopy by under which beings can sit. So in the practice, when one just develops one kind of quality, one gets imbalanced, one suffers from it, and it creates kind of negative results. Yeah. मैं संक्षिप्त करने की कोशिश करूंगा। कई चीज़ें अनवजू जी ने हमें बताई। डॉक्टर साहब का सवाल ये था कि sorry, Dr. Saab, you'll have to help me. Different people are stuck up at different levels or different stations. जैसे अनवजू जी ने पहले बताया ना कि सबके मार्ग अलग अलग हैं, तो उसी को डॉक्टर साहब आगे बढ़ा रहे थे। और तो अनवजू जी ये बता रहे हैं हमें कि भाई ये केवल आध्यात्म की बात नहीं है, हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि अलग अलग लोगों के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई जैसे डॉक्टरी में आगे बढ़ता है, कोई आर्टिस्ट होता है, किसी का कोई और रुझान होता है। तो जिस तरीके से सामान्य जीवन में गुण और जो प्रवृत्तियां हैं वो अलग अलग हैं, तो बिल्कुल वही स्थिति आध्यात्मिक जीवन में भी है। जो हमारे आध्यात्मिक गुण हैं वो और जो प्रवृत्तियां हैं जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस को ब्लॉक करती हैं वो अलग अलग किस्म की हैं। तो इस वजह से जो उसका मार्ग है, जो इन प्रवृत्तियों को कम करने का, खत्म करने के जो एंटीडोट्स हैं वो भी फिर हमें अलग अलग लगाने पड़ेंगे। फिर कुछ दो बहुत दिलचस्प उदाहरण दिए कि सुक्तों में एक प्रसंग एक ऐसे व्यक्ति का आता है जिसका बहुत स्ट्रांग राग चरित्र है। वो सुंदर वस्तुओं को अप्रिशिएट करता था, फूलों से उसका व्यवसाय जुड़ा हुआ था, और जो उस व्यक्ति के आचार्य थे उन्होंने उसको अशुभ कर्म स्थान दिया साधना के लिए, और वो कुछ भी नहीं कर पाया उससे, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्तियां थी, उसका जो चरित्र था, उसके लिए उस प्रकार की साधना अनुचित थी। क्योंकि भगवान बुद्ध लोगों के उनको समझ पाते थे, उसके अनुसार फिर उन्होंने एक फूल की जो अनित्यता है, जो वो मुरझा जाता है, उस माध्यम से जब उन्होंने उस व्यक्ति को कर्मस्थान दिया तो उससे फिर उसकी काफी प्रगति हो गई, संभवतः वो मुक्ति के स्रोत में पड़ गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में भी हम सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग हैं, तो इसीलिए हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार की साधनाएं हमारे लिए उचित हैं। फिर एक और चीज अनवजो जी ने बताई कि भाई कभी कभी हमें लगता है ना कि जो मुक्त हो चुके हैं, जो अरहंत हैं, वो सब एक जैसे होंगे, बिल्कुल परफेक्ट पर्सन्स होंगे।
वो कहते हैं ऐसा नहीं है। जिन लोगों को कम से कम थाईलैंड में जिनको समझा जाता है, माना जाता है, जो मुक्त हैं, जो अरहंत हैं, अगर हम देखेंगे तो उनके जो व्यक्तित्व हैं वो बहुत अलग 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 हैं। तो ये शायद हमें मौका देता है, जो हमारी धारणाएं हैं साधना के बारे में या मुक्ति के बारे में, उन धारणाओं को दोबारा से एक बार हमें शायद जांच लेना चाहिए। हमारे लिए ये एक मौका है शायद। No, but I do have a question from the morning conversation. Okay. So, when we were talking about karma and we're basically talking about intentions. Sometimes we do things, say even wholesome things, but we're not really developing awareness towards those actions. Not like creating an intention that, okay, this is what I'm going to do, this is how I'm going to do it, right? So I wonder if those actions have any effects in state. What was the question? Sorry. Okay. Okay, my question is, So yeah, any action has effect on the mind. Any action, big or small, any thought, any speech, any word that you say has effect on the mind. Intentions are not always very conscious, but to some extent one is conscious. One feels. How does it feel when I speak truth or when I speak false? For example, if somebody is used to speak false speech, he's become less aware of it, less sensitive to it, and he may not feel, but somewhere inside it feels there is some fear. What if somebody will find out that I'm speaking a lie? And also oneself kind of get confident because it's actually true. I'm saying things and I believe what I say. Just one example. So our habits affect how much we are sensitive. If one is very much used to speak truthful speech, then when one lies, one feels it as in a very strong way, and then one has some kind of a regret and determination to change it or to resolve the situation. So anything that we do have some effect. Some are small, some are big, and the more we practice, the more we get sensitive. The more our mind is pure, the more any kind of stain become apparent. It's like a white cloth. Even if there is some kind of a little bit of stain on it, some kind of ink being spilled on it, it immediately being seen because the whole cloth is white. And so when our mind becomes clear and pure and bright, it's easier to make a difference, to change our bad habits, because we actually see what is the problem. yeah, but I mean, my question was about the wholesome things that we do without really developing your sati. Like, for example, I'm staying here and I'm doing all these things and I do it with a good heart, I feel. But I'm not like switched on all the time that, oh, I need to be meditative, like be aware, right? So if it will have an impact on my practice. Yeah. Yes, first of all, yes, of course, because the intention originally is good. When you decide, you make the decision to make something, there is a certain understanding. What does it
let's say you decide to cook a hummus. Then you have this thought, the Israeli monks will be happy, right? What is it? It's punya, because you actually make it, you had the meta there, you thought about them, even though it doesn't really matter in a way. Why does it matter? But this kind of thought, this care, this kind of intention brings happiness. And then second time, when they actually have it, you again happy. And then third time, when you remember it, again you are happy. So it actually brings a lot of happiness. And this is the same with other actions. तो बनते महापन्या मुझे समराइज करने को कह रहे हैं इसे हिंदी में। तो मैंने सवाल पूछा कि अगर मैं कुछ कर्म करती हूँ जो कि देखने में मेरी जान होलसम है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सती से उसको नहीं कर रही हूँ, तो क्या उसका मेरे मन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो भंते ने उसका जवाब 2 हिस्सों में दिया। पहले उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने कहा कि चाहे वो एक कुशल कर्म हो या अकुशल कर्म हो, उन दोनों का ही हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। चाहे हम वो काम सती डेवलप करते कर रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर किसी ने झूठ बोला तो वो देख पाएगा कि उसका असर मनुष्य पे पड़ता जरूर है। अब हो सकता है कि जिसको झूठ बोलने की आदत है वो बार बार झूठ बोले, तो धीरे धीरे उसको ऐसी आदत हो जाएगी कि उसको अपने मन पे पड़ा हुआ उस अकुशल कर्म का प्रभाव दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो फिर हमें अपने अकुशल या कुशल कर्मों का प्रभाव अपने मन पे दिखने लगता है। और ऐसा ही कुशल कर्मों के साथ भी होता है। तो जैसे कि अगर किसी ने कुछ भोजन बनाया और वो संघ को दान में दिया, तो जब आप वो भोजन बना रहे हैं, तो चाहे वो अकस्मात ही आपके मन में विचार आया हो और आप वो बना रहे हैं, तो आप एक खुशी से आपने वो किया था, तो आपको खुशी होगी। फिर जब वो दिया गया दान भिक्षु संघ ग्रहण करता है, तो देखकर मन को खुशी होगी, और फिर बाद में जब हम उस बात को याद करेंगे तो भी हमें खुशी होगी। तो बनते कह रहे हैं कि मन पे प्रभाव पड़ता है। I have a question to Tisaro. So, one that Tisaro, having been in Israel, as a monk, how does it feel? Is it kind of, you have never been in Israel as a monk. Was it already that you are used to being a monk, that we felt like normal being there, or was it very strange, weird? It's relevant also for me. सो भंते अनवज्जू जी भंते तिसरो से एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप भिक्षु के रूप में पहली बार अपने देश इज़राइल वापस गए थे इन छुट्टियों में, तो वहाँ पे भिक्षु की तरह जाना कैसा था? उसका एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? Yeah, it was both, I would say. Of course, being in such a familiar place felt like the most normal thing possible in many ways. And so, in that sense, there wasn't such a difference. But of course, at the same time, it is different to be in a different role. And one thing that was interesting was that there are nowadays, at least in Jerusalem, there's a very large population of Sri Lankan foreign workers who have come to do various jobs in Israel. And so quite a few times I was stopped by Sri Lankans who were very excited and happy to see a monk in the last place that they expected.
And that was a very nice feeling. In fact, one woman who lives in the neighborhood of my parents' house started to come every morning to offer food, which was really beautiful. And some other friends of hers from the Sri Lankan community also joined in. And at one point, I joined them for a ceremony that they held for Vesak, which was 1 month later. They were following, I guess, the Thai and the Sri Lankan calendar. And they have a center set up in Tel Aviv, and which is basically a small apartment that they rented. And they were saying that they usually try to bring Sri Lankan monks, but for now they're having trouble with the visas. And they were just really so thrilled and happy to be able to have a monk there for their ceremony. And that was very eye-opening. I mean, it's an area that I had known in the past, but I never realized that there was a Buddhist community right under my nose. So that was really felt the power and the road can travel all across the world and really have effect even in the last place that I would have guessed. And also something like visiting the old city of Jerusalem as a monk took on a special significance. Being in a place that has such a long history of spiritual seekers from the days of Jesus and before, it felt like to be there in the robes had an extra layer of meaning and significance. And of course, relating to family and the friends that I met is different in the role of a monk. It's, of course, not the same in many ways and at the same time different, because the form has its own regulations and limits. So one naturally engages differently with the world. So it's a complex question. I think something many monks experience differently when they first visit home, but yeah, it was certainly powerful in many ways. तो भंते तिसरो ने भंते अनवज्जो के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दो तरीके से था। एक तो ऐसा लग रहा था जैसे वो घर ही वापस जा रहे हैं। उन्होंने वो जगह पहले भी देखी ही हुई है। एक तो उस नज़रिए से उन्होंने इसको इस एक्सपीरियंस किया। और फिर उन्होंने बताया कि एक दूसरा तरीका ये भी था, एक दूसरा उनका एक्सपीरियंस ये भी था कि वो भिक्षु हैं तो अब इज़राइल में श्रीलंका से काफ़ी जनसंख्या आई है वहाँ पे काम करने के लिए। तो जब वो श्रीलंकन्स के पास से गुजर रहे थे तो क्योंकि श्रीलंका में बुद्धिज़्म का बहुत प्रचार प्रसार है और बुद्धिज़्म वहाँ पे है, तो भंते को देखकर उन लोगों ने उनका अनुमोदन किया और और वो लोग और भंते बताते हैं कि उनकी माता के घर के पास एक श्रीलंकन महिला रहती हैं और उन्होंने लगभग रोज भंते के लिए भोजन लाया करती थी और दान में देने के लिए, और कभी-कभी अपने साथियों को भी लाया करती थी उनको भोजन दान में देने के लिए। और भंते को फिर पता चला कि पास ही में एक छोटा सा बौद्ध विहार सेंटर उन्होंने बनाया है, जो कि कुछ कमरों का एक फ्लैट ही है। पर भंते को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी हुई कि ऐसा कुछ वहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा जब जेरूसलम, जो कि इज़राइल की कैपिटल नहीं, प्रमुख शहर है, ओके, प्रमुख शहर है वहाँ पर, और वो एक आध्यात्मिक शहर भी है, आध्यात्मिक स्तर पे भी एक अच्छा शहर, एक इम्पोर्टेंट शहर है। ओके, तो
जब भंते वहां गए तो वहां भी उनका जो एक्सपीरियंस था वो अलग था। वहां पे भी एक एक अलग एक भिक्षु की तरह वहां जाने में एक अलग उन्हें भाव आया। अम, और इन सभी वाक्यों से वो समझ पाए, जान पाए धम्म की अम, ऊर्जा को और संघ की ऊर्जा को, कि कैसे वो सबको प्रभावित करती है, कितना जहाँ पर लोग आध्यात्म को समझना चाह रहे हैं, उसे जानना चाह रहे हैं, वहां तक कैसे धम्म पहुंचता है। तो भंते ने कभी सोचा नहीं था कि इजराइल में भिक्षु संघ को ऐसे जाना, मतलब श्रीलंकन लोग ऐसे आएंगे और मिलेंगे, तो उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो बंदे बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद वो कहते हैं कि जब एक भिक्षु अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो उसमें भी कुछ वो जो रोल है वो अलग है। अब वो एक तरीके से पहले वाले मनुष्य भी हैं लेकिन पहले वाले नहीं भी हैं, तो उसके भी अपने रंग थे जो उन्होंने महसूस किए। ओके, वेरी गुड, थैंक यू याशिका। तो अगर जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है, अगर किसी का कुछ सवाल है या कुछ कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, अदरवाइज वी कैन देन वाइंड अप। और कल सुबह हम 5:30 मिलेंगे। We'll, like today, we'll have a guided meditation for about 30 minutes. Sit quietly for about 45 minutes, sit or walk for 45 minutes, and then do some chanting towards the end. तो सुबह का इस तरीके से रहेगा। And then again, जो यहाँ का आश्रम मोनेस्ट्री का जो रूटीन है वो होगा। और हालांकि अभी हमारा प्लान 10 बजे स्टार्ट करने का है, बट सम ऑफ आवर गेस्ट्स वांट टू लीव, सो मे बी वी माइट start a little early, just like today, so that they can still participate in the morning session. And then and because we'll do Mangal Sutta, so that might take longer than we did today. So maybe we can still start at 9:30, and if it finishes, we can still take a break. Yeah. तो ब्रॉडली यही शेड्यूल जो आज का था वही कल भी हम फॉलो करेंगे। सो विल सी यू एट 8:30। ओके, वेरी गुड। A clothing homage. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅghō Saṅghang Namami. आए हम एक साथ मिलकर भिक्षु संघ को 3 बार नमन करें।
Naman. Naman. Naman.